Hello children, so here we are with our first chapter of class 9th motion, and this we are doing it in many parts. Out of that first part we will be discussing it today. So let us see what is there in first chapter of class 9th. We have the chapter as motion, and in this chapter we are going to discuss about what is motion, what is the relative term rest and motion, what are different types of motion, what is meant by scalar and vector quantity, and finally we'll differentiate between what is distance and displacement. Okay, so without wasting time, let us introduce our topic motion. Whatever right now we see in our day-to-day life, every object seems to be in motion. Like if we have to travel from one place to another, we have to sit in a car or in a motorbike, and as soon as it starts moving, it starts displacing from one point to another point, then only we'll be able to reach on the destination. Now, next example is our fan. If the fan does not work now in the summer season, or if it does not work for 1 hour, we will not be able to survive properly. We'll feel so much hot that we'll not be able to live. We'll start getting irritated. Okay, the next can be our eating process. If we have to eat something, proper chewing or proper taking of the food from our hands. So for each and everything we require motion of our body. That means motion of our hand and then motion of our teeth, and then finally the food passing through esophagus and all the processes. Okay, and the next can be the motion of water flowing in the river. If the water does not flow, we will not be able to transfer the water from one place to another. So this means that motion is one of the most important topic and important phenomena for our life. Now, if we go in a deeper level, in a major level, that is solar system level, so there we can see that all the planets revolve around the sun. That means all the planets are in motion. There is no planet, no single planet which is at rest. The same if we consider our morning, day and night process, the same is because of the motion of moon and motion of earth. Next can be the revolution of moon around our earth. Okay, so all these process requires motion. Without motion, our life is not possible at all. So this is why we are going to learn this chapter, and let us discuss what are the different points in this chapter. Now, हम कभी किसी चीज को रेस्ट में या मोशन में कब बोलते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लड़की अर्थ के सरफेस पे खड़ी हुई है. ओके, अब हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर हम एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं मतलब हम रेस्ट पे हैं, ठीक है. लेकिन अगर इसको मेजर लेवल पे देखें, एक बड़े पैमाने पे अगर इसको स्टडी करें, तो हमारा अर्थ तो हमेशा रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है. इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो नाउ कंसिडरिंग द लेडी विल नॉट बी एट रेस्ट, because as the earth is revolving around the sun, so the lady is also revolving around the sun. So that means the lady will not be in motion. Okay, so अब कैसे बोलें कि lady motion में है कि rest पे है? So now defining rest and motion as a relative term. Rest and motions are relative to each other. That means this depends upon the observer's frame of reference. That means अगर उस lady के बगल में अगर मैं खड़े हो जाती हूँ और अगर मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ और लेडी अगर मूव नहीं कर रही है तो वो लेडी रेस्ट पे होगी. लेकिन उस लेडी को अगर मैं सोलर सिस्टम के बाहर जाके अगर कंसिडर करती हूँ तो वो लेडी मोशन पे रहेगी. दैट मीन्स ये हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट कहलाएगा कि मोशन कहलाएगा. बट इससे ये चीज क्लियरली समझ में आ जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स पे एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पे नहीं है. ओके, रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन. Body is said to be at rest if its position does not change with respect to its surrounding. That means अगर हम इसको आधा डिफाइन करेंगे कि a rest if its position does not change will be a wrong definition. We have to explain it with respect to its surrounding. Now, whereas when the position of an object changes with respect to its surrounding, it is said to be in motion. Now, the state of rest or motion of the body is relative to each other. Okay, so now in class 9th you have to specify that these two terms are relative, and also you need to specify आप किसके respect पे rest या motion को consider कर रहे हैं. Okay, let's move ahead to our next point. Now, the train is moving. Now you can see in the screen the train is moving. For example, I am
right now I'm sitting and I'm seeing the train, so the train is in motion because with respect to me the train has started moving. But if I am inside the train and if I am one of the passengers are sitting quietly, there is no motion in the passengers. तो अगर सेम चीज मैं ये बोलूंगी कि अगर मैं ट्रेन के बाहर खड़े होकर ट्रेन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, दैट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैं हूँ जो बाहर में है, तो ट्रेन मेरे रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. बट अगर मैं ट्रेन के अंदर चले जाती हूँ तो माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नाउ आई एम इनसाइड द ट्रेन एंड ऑल द पैसेंजर्स विथ रिस्पेक्ट टू मी आर एट रेस्ट. So here we clear our concept that the same object can be at rest also and the same object can be at motion. It truly depends upon the point of reference or the frame of reference with respect to which we are considering it. Okay, now let us discuss what are the different types of motion. First type of motion is rectilinear motion. Straight line motion को हम rectilinear motion बोलते हैं. We are considering circular motion. When the motion is around a circular path, it is called circular motion. And oscillatory, that means जो pendulum होता है, watch clock pendulum, that is an oscillatory motion. So let us discuss what is rectilinear motion. The boy is walking straight on the road, on the path. So this type of motion is called as straight line motion, and this describes the motion of a particle or a body. This is only called as rectilinear motion. Next one is circular motion. When the object along the circumference of a circle or rotation on a circular path, this motion is considered to be circular motion. Okay, and what is oscillatory? Here the lady or a girl is swinging on a swing. So it defines the to and fro motion of an object from its mean position. This is known as oscillatory motion. Let us consider this on a sidewise. Initially the girl was at center point, that is known as its mean point. Then the girl has applied force on the ground, so it went back and then again front. So this back and front motion or to and fro motion is only called as oscillatory motion. So here we have defined three different types of motion. Now let us see what is a scalar or a vector quantity. A scalar quantity, the physical quantity can be basically divided into two parts, that is scalar and vector quantity. Scalar quantity क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड या उसके वैल्यू के ऊपर, तब उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. सेम क्वांटिटी के साथ अगर हम एक डायरेक्शन को ऐड ऑन कर देते हैं या फिर ये बता देते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में कि साउथ डायरेक्शन में कि अपवर्ड डाउनवर्ड, दैट इफ वी डिफाइन इट, दैट विल बी टेलिंग इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. We will discuss both of them in detail in this video only, so don't worry. Okay, if you're not understanding now, don't worry, we'll discuss it in the continuation of this video. Now scalar quantities are that are fully described by its magnitude. Magnitude मतलब उसका numerical value. Vector quantities are that are fully described by both magnitude as well as direction. जब हमारे पास magnitude भी हो, value भी हो, direction भी हो, तो उसको हम vector quantity बोलते हैं. Now let's see what all physical quantities are scalar and what are vector. स्केलर के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो डिस्टेंस हमारा मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड हमारा एक सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है. टाइम, हम क्या टाइम को बोलते हैं कि 2 किलो टाइम हमारा नॉर्थ में है कि साउथ में है, नहीं, टाइम हमेशा यूनिवर्सल क्वांटिटी है. मास हमारा यूनिवर्सल क्वांटिटी है. टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल दीज क्वांटिटीज आर ओनली डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड. बट हम ये जरूर बोलते हैं कि फोर्स हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट मोशन कर दिया, या एक ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वो उसका क्या है, वेलोसिटी है. सो ऑल दीज क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होना जरूरी है या डायरेक्शन बताता है, दैट इज कॉल्ड एज अवर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट्स सी, द बॉय इज इनिशियली एट पॉइंट O. बॉय पहले इनिशियल, दिस इज द नंबर लाइन. You already have learned number line in your maths. Now number line is having 0. From in the right hand side it is having all the positive values, in the left hand side it is having all the negative values. तो number line में हम एक object को, एक boy को, this yellow shirt boy, we are trying to move him left and right. Okay, पहले उस boy का initial position है हमारा O point. That means हमारा point of reference है O point. थोड़ी देर बाद वो लड़का right hand side move करता है 3 steps. Okay, that means it is traveling till point A. After some time, it travels from A to O. It comes back from A to O. So total number of steps walked by that boy is 3 steps. After some time, the boy travels from O to B. That means कितने steps total travel किया उसने? Number of steps is 4. After some time, the boy again walked from B to C. So from B to C, how many steps? 2 steps.
अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं ये बोलूँ ऑब्जेक्ट पहले, दैट मीन्स बॉय पहले O से A गया, फिर A से वापस O आया, फिर O से B गया, फिर B से वापस C आया, तो इस पूरे प्रोसेस में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फाइनली तो वो पॉइंट C पे आ गया। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल कितना स्टेप्स टोटल कैलकुलेट किया? तो पहले 3 स्टेप्स O से A, देन +3 दैट इज A to O, देन +4 दैट इज O to B, देन +2 दैट इज B to C। तो इस पूरे एंटायर प्रोसेस में लड़का O से C जाने के लिए कंप्लीट 12 स्टेप्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, सो दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय इज 12 स्टेप्स। बट अगर मैं ये बोलूं कि लड़का पहले O पोजीशन पे था और अब लड़का वापस से C पोजीशन पे आ गया है, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? O से C जाने के लिए उसको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करने का क्या, अगर वो पूरा पाथ ना ट्रैवल करे तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लगेगा? O से C तक। डायरेक्टली O से C जाने में कितना स्टेप लगेगा उसको? O से C जाने में उसको लगेगा 2 steps. From O to C only 2 steps. So actual change in the position from initial point O to final point C is 2 steps. तो जब हम टोटल पाथ ट्रैवल कैलकुलेट करते हैं, जैसे O से A, फिर A से O, फिर O से B, फिर B से C, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रैवल। लेकिन उसी को हम ये बोलते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। Okay, so let us define what is distance and displacement. Total path length traveled by the body is called as distance. It considers only magnitude. क्या मैंने यहाँ ये बोला कि वो लेफ्ट गया, राइट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया? नहीं, मैंने सिर्फ टोटल स्टेप्स कितने हैं उसको कैलकुलेट कर लिया. So this is my distance. Now, shortest distance between initial point and final point is called as displacement. Okay, यहाँ पे मेरे को बोलना जरूरी है कि आप O से A से O लेफ्ट जाओ तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, 2 स्टेप्स में आप डिस्टेंस कवर कर लोगे. तो वो क्या होगा मेरा, उसमें मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है. सो इट इज कॉल्ड एज, इट इज कंसिडर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर वो एग्जाम्पल समझ में ना आए तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट पॉइंट O, द बॉय इज इनिशियली एट पॉइंट O. वो 4 मीटर्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. ओके, टिल पॉइंट A. वो O से A 4 मीटर चलता है, फिर A से वो B जाता है 3 मीटर्स. ओके, तो अब मैं इसको देखती हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? O से A हो जाएगा 4 मीटर्स और A से B हो जाएगा 3 मीटर्स. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 7 मीटर्स. बट अगर इसी का मैंने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट वी रिक्वायर डायरेक्शन. तो पहले O से A ऑब्जेक्ट जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में, फिर A से B जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में. अब अगर इसको O से भी डायरेक्टली जाना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. O से भी डायरेक्टली जाना है तो ये बहुत सारे पाथ ले सकता है. जैसे फर्स्ट पाथ ये कर्व्ड पाथ ले सकता है. सेकंड तरीका क्या है? ये एक सेमी, पहले आधा कर्व राइट हैंड साइड ले, फिर आधा कर्व लेफ्ट हैंड साइड ले, ये भी कर सकता है. बट डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन में हमने कहा था कि दिस शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दैट मीन्स इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. So OB gives us the straight line, so that will be giving us our displacement. ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट. Okay, the direction will be north east. You can see it from the diagram of our this map. Okay, direction. So if we want to calculate OB distance, how we will do? This triangle is a right angle triangle. Okay, so by Pythagoras theorem, OB square equals to OA square plus AB square. So OB square will be equals to 4 square plus 3 square. That will give us 25. So OB is 5 meters. And OB is the shortest distance between O and B. Okay, so this is OB is 5 meter towards the northeast direction. So this again, when we recap, we will be able to understand that distance is total path length and considers only magnitude. Displacement is the shortest distance between initial point and final point, and it has to consider magnitude as well as direction. I hope you would have understood this topic very clearly. If any topic is not clear to you, please tell me in the comment section, and we will be doing the next part of this module very soon. So keep watching, keep learning. Thank you.